You are BSc. Yes, sir. MSc actually. MSc. Yes, sir. अच्छा. When India got independence, at that time, what was the population of our country? So exactly, I cannot remember. Around. Yes, around 30, 35 to 40. 35 to 40 crore. At that time, what was the percentage of forest or percentage of land which was covered with forest? 50 to 60% around. Have you not even taught? It has not been taught in your. So forestry actually is not in our syllabus. Agriculture, I am agriculture. No, but you have opted a subject on forestry. Yes, first year. That's why I am asking. This is very important. Now, the percentage of forestry that should remain for ecological balance is 32 to 33 to 34%. It should be. Now in India, it is around 23 or 22 to 23%. 24.6%. Now, day before yesterday there was a conference. Your OUT professor told it is 22. It perhaps in the net it has been given 23 or 24 So or it is being decreased gradually. That's why I am asking this. So unless there is ecological balance, what will be the consequence? So the natural resources that we have now get deteriorated day by day, and the future generations will not get the equal benefit that we have nowadays. This one. So natural resources are the basic for every developmental activities and all things. So that's why if it is not available, then how the future prosperity will expect in the future. That's the main issue. Supposing the population is increasing day by day, how to accommodate those people if we will not keep cutting the trees from the forest? Where the people will stay? How to maintain a harmonious balance between population explosion, demographic explosion and environmental pollution? This is a fundamental question you are likely to get in your virus. Be sure. You tell this. What is coming to your mind? How to make a harmonious balance between population explosion and ecological balance? So it is actually a holistic approach. We'll basically focus on the sustainable management. That means both policy and people awareness both play equal role in this approach. For population control, family planning programs should be strictly implemented. That should be given more focus. And for that approach, policy along with that sustainable management and forest management. Apart from policy, people awareness, public awareness should be given more focus. That's why we can manage both things in the same way. Before how many years the earth had come to existence? So nearly 5 billion years ago. What have been taught in the university? The universe, when the universe had been created, there are three concepts. Universe, second is our solar system, third is earth. There are three systems. Yes, sir. You tell me, any idea? So when they got created, so first universe got created. A Big Bang theory after Big Bang theory. At nearly 13 billion years ago. 13,000. 1370
crores of years before. 13.7 billion years. Then our solar system. Where? 5 billion years ago. 4.5. 450 कोटी वर्ष तले. Then our Earth. केबे? 3.5 to 4 billion years. 3.5. जेतला अर्थ हमर क्रिएशन हला. अर्थ क्रिएशन हला पर केते वर्ष परे प्रथम लाइफ आसीथिला. ए सोशल फॉरेस्ट्री कथा मासि सेहि में बचरथि एग्रीकल्चर कथा आसी सेहि में. तो प्रथमे हमर जो लाइफ ता आसीथिला कोथे लाइफ आसीथिला? ओशन आसीथिला. डायरेक्ट ओशन रे ना ओशन तळे? ओशन तळे कहबो. ओशन रे नुहे. ओशन आसीला तार आउर बहुत इवोल्यूशन हिसाला परे. ओशन रो तळे आसीला. ओशन जो तळे आसीला लाइफ ता सेतरे कोन थिला? तो कोन कहे? जेली लाइक स्ट्रक्चर. जेली लाइक स्ट्रक्चर सेतरे कोन थिला? मिनरल्स कोन थिला? एलिमेंट्स कोन थिला? सेतरे हाड़ फाड़ किछ थिला कि? ना. आउ सेतरे कोन थिला? So only cell accumulated थिला. only cell accumulated थिला. तापर सेटो आस्ते आस्ते आसिला कोठी ऊपर बसला. तापर सेठी मता बड़ी चलला. बड़ी चलला पर हमर समुद्र भीतर सृष्टि है. समुद्र तो सृष्टि के आस्ते आस्ते पदा बसले. सेतो को ऑक्सीजन सृष्टि ही नथला. तापर ऑक्सीजन सृष्टि हला. ऑक्सीजन सृष्टि ही तापर सेतो गछ गछ सृष्टि सरतला. माने छोटो सी रो जो प्लैंक्टन्स माने क्रिएट हेतले. हां छोटो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन सेमन बड़ सीउडी टाइप रे जिंस प्रथम सृष्टि हेतला. सीउडी जिंस हे साला परे भितरे आस्ते आस्ते लाइफ किछि विभिन्न प्रकार इवोल्यूशनरी प्रोसेस रे आसिला. तापर आसिला लेकिन पदार्थ आसिला तो ऑक्सीजन सृष्टि हेतला. गछ गछ सृष्टि हेतला. तो जेति के बेले हमर एटा पढाई दे जेति के बेले मनुष्य सृष्टि हला. धर हमर 10,000 वर्ष तले तो कोन कोचे की सापियंस? होमो सापियंस. होमो सापियंस ता केबे पृथ्वी रे आविर्भाव होइतला? होमो सापियंस जेबे आविर्भाव होइतला अराउंड केते 10,000 इयर्स पूर्वरु सेति को टोटल गछ गछ हेइ सारछि कंप्लीट फॉरेस्ट थला. तो सेही फॉरेस्ट जो थिला तार परसेंटेज केते आ ह्यूमन हैबिटेशन रो परसेंटेज केते? At that time, हां एवं वर्तमान केते? दूसरा गड़े आले तो ओडिया कोई भी बुझे सीट में तो सीट बाहर करियो तो कहीं ना जिते अपन पृथ्वी सृष्टि हेतला मनुष्य जब सृष्टि हैला 10th हमर जो मॉडर्न मैन ता केबे आसलो कि 5000 वर्ष तले हमर जते सब डेवलपमेंट सेछि केबे हिची 100 वर्ष भीतर. कि जते पृथ्वी सृष्टि हेतला तमर जने कहतले से ई सब्जेक्ट ऊपर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सोसाइटी. तो से कहले जे जेतिकी सब सृष्टि हेतला प्रथम नेचर जेतिकी थिला परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट्री तो सेटा ड्रास्टिकली चेंज हेछि एई 100 वर्ष भीतर. जा पर कि हमर जो मीथेन गैस बेसी बाहरला हाइड्रो हमर जो ऑक्सीजन नौचे हाइड्रोजन छाडुचे कार्बन डाइऑक्साइड छाडुचे तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हेला हमर एटमॉस्फेयर रे मीथेन अधिक हेला आ काई ना गछ रस कटा हेला. तो वर्तमान फंडामेंटल प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमैनिटी जे ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमको कंट्रोल करिया कहले जदि हम डिफॉरेस्टेशन हमें करूचे बा जदि हम गछ गछ न काटिबा ताले कोन अपन आस्ते आस्ते आहुरी डिटोरेट हे जिवो. तो तार भीतर केमिति बैलेंस करा जिवो तार पर ताकर टोटल टॉप हला. तो तमरो एटा जेतु पूरा डे टू डे अफेयर्स तो से जड़ित तो ए सोशल फॉरेस्ट्री जोटा फॉरेस्ट्री लिखाइ छै ना फॉरेस्ट्री तमे सब्जेक्ट रखलो ओएस रे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल देटा एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री. तो एग्रीकल्चर पर तो स्टार्ट भास्ट सब्जेक्ट आछलो फॉरेस्ट्री पर किंतु फॉरेस्ट्री पर ए जिंसडा बेसी प्रश्न अछि. तो वर्तमान परसेंटेज केते अछि आगु केते थिला केते ऑलरेडी रहिया उचित. हमर एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन ता होछि डिग्रेडेशन खाली तो पॉल्यूशन होनी डिग्रेडेशन भी होछि ताकू केमिति कंट्रोल करियो वर्तमान कोन सब मेजर्स गवर्नमेंट नउछि आ कोन मेजर्स नवा दरकार. एरा बेसिक जिंस या के ऊपर तमर कोन देखे कहलो कोटे पारा कहलो जे वर्तमान केमिति डिग्रेडेशन होछि एवं तार मेजर्स कोन नवा उचित. यू स्पीक इन इंग्लिश ना. मु तो ओडिया बुझे केंगी
ना तो बुझी में concept टा कौन पचड़े उठाओ थे now I got the point you can now reply in English. How it is getting deteriorated and what the measures to be taken. Main reason for forest deterioration is our grid. Actually, we more shifted from need towards the grid. So that's the main reason for forest deterioration. We more focus towards developmental approaches. That's why building industries, road construction, mining, all these activities that's deteriorate the forest. And apart from this, population explosion. For this, they are shifting more towards the forest. And human wildlife conflict is also there. So forest is getting deteriorated. What the measures to be done? Government is preparing and implementing many policies that should be strictly implemented. And public awareness is another important factor. And these United Nations conventions on forest conservation and all those aspects, sustainable development goals, that should be strictly implemented to conserve the forest. Who is the first scientist who had discovered fertilizer? So Holler. His name is Holler. Holler. Are you sure of it? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Then what was his statement when he died? Just before his death. Very important statement he had given. Any idea? No idea. He had written this. The meaning is this. I have not been able to remember the total sentence, but its implication is this: against the creation, man is always making a sincere effort to accommodate with the situation, to accommodate with the changes. But there are certain factors where man should not make any effort. Why? Now, when we are planting something, we are growing some seeds for our basic sustenance. At that time, supposing any insects is coming out, so to kill the insects, I had discovered that fertilizer. Immediately what happened? Now people got the benefit. But in the long run, after 30 years, after 40 years, this production of rice, this production of various seeds gave rise to cancer. This person who had invented fertilizer, he suffered from cancer. So he had written that as I had gone against the nature, that's why I am getting this righteous punishment. I am, accurate sentence. First sentence I have forgotten. Second sentence is, I am getting this righteous punishment. Mu ek shasti pae yogya. कारण मुही प्रथम ही फर्टिलाइजर जिनसा बाहर करते हैं तो हल्ला बोली मोर मन पड़ुछि हल्ला किंतु पढ़िबो ए सेंटेंस कि या बके नजर रखते हो तो परीक्षा ए भलिया क्वेश्चन आस पारे जे टिके ता भीतर पसियो फॉरेस्ट्री ऊपर एग्रीकल्चर हो फॉरेस्ट्री हला तो सब तो हॉबी कोन पेंटिंग कहलो पेंटिंग बर्तन माने इंडिया रा सबसे बेस्ट केस पेंटिंग करंदी के अवार्ड पेथिले लेटेस्ट अवार्ड के बेचंदी एपे अमृता सेबी मॉडर्न आर्ट सी एपे माने रिसेंट सी मॉडर्न आर्ट कंटेम्पररी आर्ट करंदी तो सी भी अवार्ड पाइले कोई एग्जैक्टली हमको नहीं वर्ल्ड सो वर्ल्ड रे तो माने एमिनेंट पर्सनालिटी तो लियोनार्डो डाविंची तांका तो समझ जानछ माइकलैंजेलो पाब्लो एपी करेंट सो वर्ल्ड नहीं वर्ल्ड सेटा तो प्रिपेयर करियो because you have mentioned that your hobby is painting. Yes. From the international point of view, you have to also ascertain who are the important persons who have got prominence only for their painting. You have to memorize this. So Odisha ranch Jatin Das, India ranch, world ranch. World ranch. I have a question. Have you got? Yes sir. For his what type of painting? So modern arts. Abstract. Controversial. Input controversial. I think abstract, sir.
MFOCN का first but it will give something, some message which one has to interpret. Yes. and he has That is the sweetness of contemporary art. So it has some message. It is beyond Which text. is inherent. Yes. Which is inherent in art. The moment one will have a look upon the art, at that time that sort of message will automatically come to his mind. It will flash in his mind. It need not be expressed. But the moment one will look at this, it will come to his mind automatically. Yes, government of India actually have a vision to make the farmer income double by 2022. So what are the steps actually government of India taking in that direction? So it is a multidimensional approach actually. Main focus is to increase the productivity of crops. Apart from that, crop diversification, crop intensification, to increase the productivity of livestock, to get the farmers more connected towards the processing labs, formation of more food parks. These are the approaches. What is the basic difference between PM Kisan and Kalinga IAS? So actually, basically, at the root both are same, but the amount that is given different in both schemes, and it is a centrally sponsored scheme, it is a state scheme. What is the amount? So in Kalinga Yojana it is 5,000, two installments 5,000 each, and in PM Kisan it is 2,500 in three installments actually. It's 2,000. 6,000. Total 6,000. What is the basic difference between Kalinga and Balaram Yojana? So Kalinga Yojana is actually a Krushak farmers assistance actually, and Balaram is for soil development. Means landless farmers, they will be given land for their cultivation practices. That is main focus of Balaram Yojana. What is the definition of success in your view? So in my view, success is to achieve for what you are struggling, and that is success. Tell me 5 qualities you have and you think that you are best fit for this job. Sir, I have secured more than 85% all through my career, and also I have got All India Rank 12 in ICR Junior Research Fellowship and got selected to study in Banaras Hindu University. So that I think that I have fully dedicated towards my field, and I have a good communication skill. I spoke in various platforms during my graduation and post-graduation. I believe in team spirit, and I believe in true leadership also. That's why. You are very good scholar in academics. Why don't you go for higher studies and do some research work? What attract you towards this civil service? So actually during my post-graduation I have come across many civil servants, and that's why I got motivated. And personally my roommate, my senior, in 2018 he got selected over finance service. So he motivated me mostly for this. Apart from that, my family motivation is there. So I choose to come to this field. Are you preparing civil service? UPSC? Yes, sir. First I prepared for UPSC. One attempt I got selected. Then OPSC. This is my first attempt actually. Supposing you will be selected in this. Yes, sir. Why will you prefer OPS? Why not OS? What is the basic difference? What OS personnel are doing, what OPS personnel are doing, and why you have given the preference to be OPS? You will get much time for preparation of OPS, UPSC. So सेटा तो बेसिक छे जेना तो कहयो तो मतलब एटा गाइड कर सेटा मु प्रिपेयर करनी कोन कहयो एक्चुअली सेटी मु ओएफएस क्लास दे दै छी How you have to give a satisfied answer. नहीं सर You have to give sufficient justification why you want to be an OPS officer. If you want to qualify in the OPSC, you have to give sufficient justification why you are not at all interested to join in the OS. Definitely a question comes, sir. Definitely. You see, you cannot tell them that I am preparing UPSC
and I will get much time perhaps if I will join in OPS cadre, and it will give me sufficient time, and I will get an opportunity. You cannot tell this, but to be selected also for OPS, you have to give sufficient justification. Why? Why? Any idea? କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଠି ଟ୍ରେଜେରୀ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ OFS ରେ ଆଉ କି କୋନ ବିଷୟରେ ସେ ନା, this will not the answer. ସେ answer ଦେଲେ ତମେ କଟି ଯିବ। OFS ତ ଟିକେ ତମେ କହୁନ ସେ ଯୋଉ So listen, as a OFS, Odisha Financial Service, you are into tax collection, revenue generation, and tax collection is part of non-development administration. In public administration, there is a concept development administration, which is divided into two part: development administration and non-development administration. So as a OS, you are directly contribute to development administration, and as a OFS, you are contribute to non-development administration. And non-development administration is very essential for the growth of development administration. So sir, I want to contribute towards the growth of non-development administration, that is tax collection. So you need to know what is the difference between development and non-development administration, because tax collection is part of non-development administration. So you have to give a satisfied, because when they see OFRA, so they will definitely ask that why you take OFS as first preference. So say that UPSC one my senior he give IRS. So say why another one of my senior he give OFS engineer. So they say why you take OFS. So he said, sir, I am good at numbers. So it is not a justified answer. I am good at numbers. I am an engineer. I am good at numbers. So I want OFS. This is not a satisfactory answer. So you can development part, non-development administration. Okay. So remember, this is part of non-development administration, tax collection, and you will contribute to that. And if not, if non-development administration is poor, it will impact development administration. This is okay. Yeah, I will check cross question development. So many questions will come up. You remember one thing, you can reply this. Okay. I will tell you. I will guide. Don't worry. ଆମର ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟଟା ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା? କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟନର ସୋସାଇଟିଟା କିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ସେ ଇକ୍ୱାଲ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ଆଭେଲ କରିବେ, ମାନେ ଯୋଉ ବେନିଫିଟଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହି ନାହିଁ କ'ଣ? ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଦୁଇ ତିନିଟା କହିଲେ। तो ओपीएस କଥା କହୁଛ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବି ସେଇଠି ଏଟା ସବୁ କହୁଛି ହେଲା। डायलेक्टिक ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री विदरिंग अवे ऑफ द सोसाइटी, ताकर एटा हला बेसिक कांसेप्ट। तो हमर से ताको मन भितर काहे कथा आसला, कालमास कथा भितर, कालमास भितर को ए सोशलिज्म कांसेप्ट ता कोन आसला ना, सेते से देखले तत्काल समाज रे जे किछि लोक भल तो रोचन एकदम भल रही जाते, अधिकांश लोक डाउन द लाइन सब रही जाते। जी भल रहा रही चलला, जी डाउन रहा रही चलला, आउ से डाउन रु ऊपर को जीवार चांस ही पाइला ना। तेणु ताका मन भीतर सब विद्रोहात्मक जिन आसला। ऑक्सफोर्ड से पळै आसला, जर्मनी से पळै आसला, कि ऑक्सफोर्ड रे से रहिले एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रे हमको पढ़ाइतला जहाँ हम सुनी प्रोफेसर कहते जे से प्रथम लोक जीवे लाइब्रेरी को, एवं लाइब्रेरी बंद हुआ जब बंद हुए तांको जाई से कहते सर लाइब्रेरी बंद हो आपण जान एई धरली 30 वर्ष धरली से जाई लाइब्रेरी एवं ए जो बहि लिखले कास बहि लिखले दास के तांकर कांसेप्ट हैला जे आमे जदी ए देश रे जे हम देश रे जदी आमे समस्त को भलरे मुठे खाइबा को न दे परिबा, फाइनेंशियली जेति की मिनिमम जनकर दरकार जदी सेति के हम तनो सैटिस्फाई न करिवे, ताहले देश रे ई जो रिवोल्यूशन ता दिन दिन एक्सप्लोजन हो, रिवोल्यूशन ही रहइबो एवं रिवोल्यूशन दिन दिन माने सांघातिक रूप नबो। तो ताका मन जो आसला सेहि पे से प्रथम लिखले दास कैपिटल, से सोशलिज्म कांसेप्ट लिखले। हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमर ओड अछि प्रियम्बल, प्रियम्बल व्हाट इज प्रियम्बल? सेट द प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सेटा? You tell me the preamble of Indian Constitution. So we the people of India.
We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure its citizens. Justice the प्रथम जेतले हमर कॉन्स्टिट्यूशन अति हैला सेतल खाली लिखाइतला we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. Socialistic secular ta pore आइछि amendment 42nd amendment act 1976 हां तो ए जो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट जेतले आसिला प्रथम की वर्ल्ड रे कोट कम्युनिज्म आसिला चाइना आसिला बर्तमान तो मार्क पृथ्वी जिते देश अच्छा आम सीना समस्ते अमेरिका कहे सुपर पावर लेकिन चाइना प्रकृत में सुपर पावर आज की चाइना के माओसोतुंग प्रथम जो कम्युनिज्म आनले को मसिया 1949 राइट प्रथम इस्लाम चाइना कम्युनिज्म आसला पर तापर नहीं आसी रसा ईस्टर्न यूरोप रे तापर मारी गला एबो कम्युनिज्म ला लोप पागला केबे के थिला बा जी अब मल्ले हमर जो सोशलिज्म ला रहला किंतु सोशलिज्म ला तले ताकर तले गोर्बाचोव थले प्रेसिडेंट रशिया तांको काहे कि ए जिंस भलेना से कहले सो खाली खाई कि मोटा ही ना रहबो पार्टी खोली पारिबो नाही तो ताकर से दीटा कांसेप्ट आले गोटे ग्लासनोस्ट गोटे पेरेस्ट्रोइका ए ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका कांसेप्ट जब कम्युनिज्म टा कंप्लीटली एक्लिप्स हे तो सेति कि किंतु से पर्यंत सुधा से रशिया को कम्युनिज्म आसीबा जोगु रशिया को माने गोटे सुपर पावर कर देना चाइना ने सुपर पावर रशिया को सुपर पावर रशिया खंड विखंडित हेला ताकर समय से जो ए कांसेप्ट जो पूरे देले किंतु सोशलिज्म जो कांसेप्ट है जो टंका पैसा कांसेप्ट है तुम देखियो गोटे मनीष रो खुशी रो पैरामीटर कौन तुम जदि तमरो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड टिके भलो नाही तुम देखियो मोटा सब बेले से लागिथिबो हाउ आई विल अर्न हाउ आई विल अर्न तो मनीष को फाइनेंशियल फैक्टरटा एकदम मजबूत न करला पर्यंत से पर्यंत फाइनेंशियली सब बेले वीक हे रहता है सब बेले चिंता करता है तो ओएफएस रे मु जॉइन करले मु देखिबी जे ओएस रा ओएफएस काम कोन ओएफएस मेन कामटा हो कोन सरकार जो टंका दियंती खर्च करिया पे ब्लॉक को वीडियो के माध्यम रे जते सब डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुए सेही टंकाटा रो गाइडलाइन तयारी हुए केमिति खर्च करियो से गाइडलाइनटा तयारी करते ओएफएस वाला प्रथम द्वितीय रे टंकाटा जला आसी जाए जे टंकाटा खर्च ही सारे सेमान देखंती जो पर्पस रे टंका आसीतला जोथि पे टंका आसीतला जो क्राइटेरिया को एडहियर करी टंकाटा खर्च करिया पे आसीतला से क्राइटेरिया सब ठीक ठाक अछि कि नै धर वीडियो को आसला कोटी टका वीडियो खर्च करके ताको दे देले यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दा बंद सरकार पर आसियो तो तुमको हम दे देलु धर कोटी टका हम केते खर्च ना के कोटा खर्च कर देछि तल दियो यूसी माने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तल जोथि पे आसला से ठीक अछि कि नै ताको ओएफएस सबसे रो चेक करियो देखिया जो पर्पस रहला सही पर्पस रा खर्च होई कि नै जो क्राइटेरिया करा हितला से क्राइटेरिया मीट करा है कि नै सेठी ओएफएस काम आसला तो ओएफएस ता इनडायरेक्टली सरकार का पाखरु जेते सब आसुची टंका प्रॉपर्ली लोकन पे खर्च होबा पे सी एनश्योर करिवे प्रकृत रे सरकार जो में दिजन सेठी ठीक रे खर्च है एटा उटा फंडामेंटल जिंस ओएफएस अफसर इन नॉट सेल तब के तो प्रिपेयर कर किछि अन्य जिंस पढिले बहुत जिंस भारी बने कि मु तो मोर शॉर्टकट रे कहि देली गवर्नमेंट सेक्टर रे हम 30 वर्ष चाकरी करथु ओएफएस अफसर काम होची बेसिकली एटा Okay, sir. I would one last question. Do you think Odisha is sufficient in agriculture production? Are we sufficient? Agriculture means everything. Agriculture. So we have reached different milestones, but still we have more potential. Do we aware that Odisha is importing vegetable eggs from Andhra Pradesh, from West Bengal? Yes, sir. What is the problem? Why? Sir, we have very less storehouses.
that the tomatoes, potato that we are producing, they're not properly stored to get utilized during off seasons. That's why we have to import. So, what is the problem? Cold storage. Cold Storage of cold problem. Okay, another thing, I think as you are a student of agriculture, you can contribute more to the nation, more to the society, as a means expert in agriculture rather than a civil servant. What is your view? How you think that you contribute more as a OFS rather than an agriculture expert to the society? Such type of questions are likely to come. Be sure of this. You have to prepare accordingly. On the one hand, you have completed your career in agriculture. On the other hand, you want to be an OPSC officer. Contradictory. There is no link. What is the objective? The purpose for which you have been given education is lost. How you will be able to apply all this agricultural knowledge into this OPSC sector? Such type of questions, 100%. If it is OS, you have justification. Justification. Then yes, sir, I am completely use my agriculture knowledge as a block development officer. But as a OFS, you have to face this type of question. So you should prepare your reply. How agriculture education, forestry education, social forestry education will be helpful in becoming OFS officer, and how both are linked. You have to make some research on this and before going to examination. So becoming OFS officer can be helpful है तब तो मैं से लिखी OFS officer how it is help, how you utilize your knowledge. तमें तो गोटे पट कहबे तमे एग्रीकल्चर रे पाठ पढलो केते सुंदर किना देश को एग्रीकल्चर डेवलप करेबा हां तमे से कथा चिंता न करिकी तमे ओएफएसएस को कोन भाबिछ तोर कोन ऑब्जेक्टिव तम पाठ रे काहे की हेल्पफुल तम केमि हेल्पफुल होची बा केमि हेल्पफुल हो ए यार रिप्लाई तो भाबियो पढियो प्रिपेयर करियो व्हाट इज योर फादर so father high school teacher where are you staying so currently I am in Bhubaneswar my hometown is Narsinghpur Cuttack अच्छा तमरो सोशल फॉरेस्ट रे आवरी पढिहार अछि भलो किने पढिहार अछि वर्तमान केते परसेंटेज लैंड हमरो होची कल्टीवेशन केते परसेंट बैरन रहउची जेती परसेंट कल्टीवेशन रहउची गोटे थरे वर्ष होची कि दुई थर होची कि तीन थर होची कोन वर्तमान लेटेस्ट कोन सब टेक्नोलॉजी आसलानी बढ़िया बेका जो सीड्स हमें खाउचे से सीड्स सेटा को तारो फ्यूचर कोन तनो सेटा जेहेतु खराब करूची लाटर स्टेज रे कैंसर बार करूची तनो ऑर्गेनिक प्लांटेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग पाई सरकार कोन गुरुत्व दोजंदी these are the questions that are likely to come. You have to prepare this accordingly. Last question, do you know there is an international seed bank? International seed bank where seed are protected if earth face any doomsday. Yes sir. So where is it? This is northern hemisphere actually. I don't know. Northern hemisphere. I don't know. Means I can't recall it right now. Okay. ले कोई दे टाइम से कोई दे तो मैं रहूं हाँ what is it Satapathy movie इट्स टिके भूली जाइछि से गोटे माने बनाई छि बस जोटे बनाई छि प्रकृति हां जानछि बनाई के रखा है छि से तोळे माने अपोकैलिप्स आसु हां एलिस आसले से सीड बैंक टा हेल्पफुल हो पूरा एटा पढिबो एटा आर्टिकल बनाई छि देखो एग्रीकल्चर ओडिशा एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एटा तो बेसिक जैसे तमरो ऑप्शनल बेस एटा तो एग्रीकल्चर बाबत पूरा जानबा କଥା तमे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बाबत तो इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी के बेटर करियो परीक्षा पर्यंत इट इज बेटर टू स्पीक इन इंग्लिश इन योर हाउस और विथ योर फ्रेंड्स you or even if you are not getting a single person with whom you will be interacting in English, it is better to stand in front of the mirror and tell something. You do this. Otherwise,
you might be a good student, you have secured more than 85% in most of the examinations, it is immaterial. But if you are unable to express any particular thing in a systematic, methodical way, non-stop way, then it will not have any sort of cascading good effect upon the members. So till examination, you have to give an importance to this also. Yes, absolutely. One thing देखो तो मैं पचार लो कि क्वालिटी कौन देखो मु 80% आंसर से क्वालिटी there is a qualification माने तुम you feel that what is the quality in you that you be a good civil servant compassionate हवा कथा you are rational thinking you have patience these are the qualities of which one should imbibe or these are the qualities I have already ingrained in my personality. Sir actually ମୁଁ या ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ସେ FCI ର assistant general manager interview दा गुरगांव ଯାଇଥିଲି ତ ସେଠି ମୁଁ जो ट्रेनिंग ଟା नै माने इंटरव्यू पे करଥିଲି से मते एटा सिखेथिले आगो कहयाको ତ सेते ମୁଁ कहली UPSC सिविल सर्विस हो गया सेटा हो गया ना ना तो मतलब it will hurt the ego of the members. They will think that this person has secured more than 80% power, he is thinking that definitely I will qualify. Negative negative. This will go negative. Arrogance. So you see, we are telling from all angles how you will be selected. This is our motto. To what extent you know, and up to what extent you are likely to know before the examination. Okay. तो तमर परीक्षा पर्यंत टिके रहिबो मिरर रे कथा हो सामने रे तो संग मान सहित टिके चेष्टा कर आउ टिके बेटर करिया पे इंग्लिश ता फ्लुएंसी आउ टिके मेंटेन करिया पे आ पाठ को टिके आउ भीतर बसिया पे ए जो जिनसा कहले सेटा तो मन रखियो एटा नेट रे मारले आसी जो संग संग किंतु तमटा मन रखि दी क्लियर होला तो सर इटा कोन कहबी जोटा how you see as kind of strength कोन जोटा what is your strength हां सी जोटा कोन बताओ लीडरशिप क्वालिटी अछि कि हमरो patience बहुत patience अछि I am compassionate towards the problem of others एटा सब हेल्पफुल हो OS पाइना OS पाइ एटा सर कोन आ किछि नाही OS पाइ नाही किछि नाही OS रे हमें एंती सेग्रीगेट तो करि परिबा नाही सेया करबा तमु पचरे तम कहबे जे हमर देशर आर्थिक मानदंडटा भलो किना जे पर्यंत सुधा सुदृढ़ न होइछि से पर्यंत सुधा हमें सबुथरे डेवलपमेंटल एक्टिविटी चाहो हे करियोनी तो आर्थिक मानदंड सुदृढ़ करे पहले जेतिक टका सरकार खर्च करचोंदी भी ताकू भी हमें यदि प्रॉपर्ली देखिबा प्रॉपर्ली यूटिलाइज करबा मध्य लोकंकर किछ हो जब से तुम पचरे रहंती तमे कहीं फील करछ जे प्रॉपर्ली होनी बोली तने प्रश्न पचरे ता भीतर बहुत की आछो तमे कहि परियो जे एबे धर रिसेंटली एबे अंकर हायर एजुकेशन रो मंत्री का घर रेड है 50 कोटी टका कैश भाला ई 4 दिन तले जो पड़ी देखियो एई लोकमानकर घर सब मंत्री की रेड होची ए आईएएस अफसर को घर रेड होची कि आईपीएस अफसर घर रेड होची तो जो टंकाटा सरकार आनुंदी दउचंदी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रे सेटा बाटवाना हे होची तो हमर जो पॉलिसी गुडा रहउची से पॉलिसी गुडा भीतर फ्लॉज रहउची तो फाइनेंस ऑफिसर हिसाब रे हम देखिबी जे सरकार जो थी में पठे चंदी पूरा इन लेटर एंड स्पिरिट प्रॉपर्ली खर्च होची जदि हम फाइनेंशियल पार्ट राजीव गांधी ता समार कहला माने जे राजीव गांधी if I send 1 rupees by the time it reach people it become 10 paisa से कहला 414 टंका टाकर टंका ने पठेले पाखा पाखी 80 पैसा ए बाटमाना हे होची 20 पैसा लोक में खर्च होची आउ सेटा माने तो कोनती पंचायत राज डिपार्टमेंट नो डकायत राज डिपार्टमेंट पंचायत राज डिपार्टमेंट अधीन रे हम सब वीडियो थांती हां पंचायत राज टीआर डिपार्टमेंट तो टंकाटार प्रॉपर यूटिलाइजेशन में सरकार जेति टंका भी आनुचंती सेही टंकाटा लोक पे प्रॉपर्ली खर्च करा हबो तार मध्ये नगर इम्प्रूवमेंट आउर भलो हम देश विभिन्न फील्ड और बहुत कथा कहि हबो बहुत कथा कहि हबो ता भीतर हेल्थ सेक्टर भी कहि हबो जाओ नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करके देखियो ओके ये सो एंगल सर जो कहले एटा माने तमे को बही रे ओके एटा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 40 45 वर्ष जो एक्सपीरियंस तुमको दिया यू कैन नॉट गेट कि तमे जानि जे कोठी इंटरव्यू वाले केते मिनिट नौ छने हम गोटे माने एटा गोटे माने एते नॉलेज तुमको दिया 10 मिनिट्स 15 मिनिट्स को कोठी भी की कर देबे ए जो नॉलेज ता पाइला ता ऊपर
टिके रिसर्च करके भलसे टिके प्रिपेयर करके जाओ हम चाहूँ जे तुम जेहे तुम मे बी मेन में भल कर इंटरव्यू वेल से सारे थैंक यू सो मच Okay.